Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we will study about HTML and those students who don't have desktop or laptop, they can do coding in their phone. How to do coding in your phone? I have made a separate video for this. I have given in description box. You can check it. Let me tell you, I will be using Hindi as well as English language for better understanding. I will be dividing this video into 4 parts. First, what is HTML? Second, basic information about HTML. Third, the basic structure to create a website. And fourth, a demo website making. What is HTML? First of all, HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a standard language for developing and creating interactive websites. HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम इंटरैक्टिव और ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं. HTML describes the structure of web page. HTML बताते हैं कंप्यूटर को कि वेब पेज कैसे बनेगा. Introduction to HTML. HTML is the fifth and current version of HTML standard. HTML is currently used because it supports mobile technology. HTML5 HTML का लेटेस्ट वर्जन है और ये मोबाइल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. मतलब हम मोबाइल में भी वेबसाइट्स बना सकते हैं. Major browsers like Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera and Apple supports the feature of HTML. दूसरी बात, मेजर ब्राउज़र्स मतलब बड़े बड़े ब्राउज़र्स जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा जैसे ब्राउज़र्स भी HTML5 को सपोर्ट करते हैं. तो HTML5 इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. HTML documents are created in any text editor and can be run on any computer that has a web browser. मतलब HTML document बनाने के लिए text editor जैसे Notepad, Writer, HTML5 जैसे applications में हम इसमें बनाकर उस वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू. मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर और एक वेब ब्राउज़र इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, द HTML टैग्स आर कीवर्ड्स दैट आर रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स. दोज आर नोन एज टैग्स. दिस वन is known as start tag and this is end tag with one slash. Tags are not case sensitive. मतलब हम कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो कोई भी लेटर्स में लिख सकते हैं क्योंकि HTML tags केस सेंसिटिव नहीं होते. Every HTML page is within two tags, HTML start tag and HTML end tag. मतलब हम जो भी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोडिंग लिखते हैं वो दो मेन कोडिंग्स के अंदर होते हैं. वो है HTML start tag and second the HTML end tag. इसके बीच में हम कोडिंग्स लिखते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है. Internally the page is divided into two sections, head section and body section. Internally ये पेज दो सेक्शंस में बटा हुआ होता है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शंस. ये हम आगे जानेंगे. This we will study further. Now basic structure for writing a code. You have to remember this basic structure as to write a code you have to follow these steps. First is doctype HTML. Then we have to write the tag HTML. So the next is head. Inside head tag we will be using title tag. Then head close. Then body close and HTML close. Don't forget to put the end tags. I will recommend you to put the end tags along with the start tags and then write the code inside it. I repeat, first doctype HTML, head, title end tag, head end tag, body end tag and then HTML end tag. Now you can notice that except doctype HTML, every tag has an end tag. See, HTML start tag, HTML end tag, head start tag, head end tag, title start tag, title end tag, body start tag, body end tag. Now let us understand what does this tags indicate. First, doctype HTML. Doctype HTML indicates that the document type is HTML. ये बताती है, ये टैग बताती है
कि ये डॉक्यूमेंट जो है HTML है. Next, the HTML tag represents the root of an HTML document. It is the container tag. मतलब इस टैग के अंदर ही सारे कोडिंग्स लिखे जाते हैं. HTML स्टार्ट टैग और HTML एंड टैग्स के बीच ही सारे कोडिंग्स लिखे जाते हैं. This HTML tag also indicates that the document is an HTML file. Now the next one is head tag. It includes title tag, and mainly the information within these tags are not displayed in the output. The informations given in this tag are mainly used by the search engine. For example, the tags written inside these head tags are title tag, meta tag, and style sheet informations. And now let us understand that why we should write the title tag. The title tag, we should write the title in the title tag because the name that we write inside the title tag is displayed in the title bar of your website. The next tag is body tag. What's its uses? This tag includes all contents which is to be developed in the website. Most of these tags are included in this tag. This tag includes all contents which is to be developed in the web browser. Most of the tags are included in this tag. मतलब most of the tags इस बॉडी टैग के अंदर ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इस बॉडी टैग के अंदर हम जो भी टैग्स लिखेंगे वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा. पर अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन इस हेड टैग के अंदर लिखेंगे तो ये आउटपुट में नहीं दिखेगा. पर इस बॉडी टैग के अंदर अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज डेमो वेबसाइट मेकिंग. Now we will make a website with the help of the basic structure we have learned in the previous slide. Now for this we will go to our text editor that is our handwriter and we will write a code. So what was the first line in the basic structure? It was doc type HTML. So let's write it. Doc type HTML. The next was HTML. I will suggest to write the start tag along with the end tag so that you don't make any mistakes. Leave some space. The next tag was head tag. And inside this head tag, we wrote the title tag. So title tag. Let's write the body tag. And write the end tag too. Now see, you will not make any mistake if you write the end tag along with the start tag. As I told you before that entire coding that will be displayed in the output are written within the body tag. So I will be writing P tag. This P tag indicates a paragraph and this is a paragraph and P end tag. I will make a detailed video in P tag. So this was just a demo website to show you that you can easily make such websites with the help of whom you will also be able to make creative websites like this. Thank you.